Bismillahirrahmanirrahim. I think sound is okay. So let's start with some quiz stuff from the last lecture. So I request to open a piece of paper, write your name and ID, and let's take a question. जी नसीम, आपकी पावर वाली क्लास ठीक चल रही है? पावर वाला कोर्स ठीक चल रहा है आपका? वो तो मेरे ख्याल आपको बोर्ड पे कराते हैं ना सारा कुछ। अच्छा नहीं, लेकिन वो तो रिकॉर्ड होता है ना, तो रिकॉर्डिंग में तो रिकॉर्ड जब होता है लेक्चर, तो रिकॉर्डिंग में तो अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपने नोट्स तो खुद बनाने हैं, स्लाइड्स तो नहीं मिलेंगी। क्या ख्याल है? भाई आपको इनकी मसला समझ आया? मुझे तो समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। पावर सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोर्स पे आप कह रहे हैं स्लाइड्स नहीं मिली हैं, तो स्लाइड्स तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद रखी नहीं है टीचर ने, वो तो नोट्स पे आपको कवर करा रहे हैं चीज़ें, जो मुझे अंदाज़ा है। अच्छा, तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया? ठीक है, चले गुड। तो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोर्स चल रहा है? तो आप अपना अगर पावर साइड पे कोई और कोर्स आगे फर्दर ऑफ़र कराना चाहते हैं तो वो आप इन टच हो जाएं उनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। वो कह रहे थे कि क्लास इंटरेस्टेड नहीं है आगे कोई और पावर का कोर्स लेने में। तो आप ज़रा डिस्कस करके अगर कोई कोर्स ऑफ़र करवाना चाहते हैं तो पहले से आपस में म्यूचुअली मिलजुल के उन सब डिस्कस करके तो फिर कोई कोर्स का नाम सजेस्ट कर दें। Okay, in the last lecture we covered up in fact we finished off with the probability stuff, and I told you that we will be doing the application of all this stuff into the communication theory, किस तरह से ये सारी चीज़ें apply होती हैं। So I hope things are clear. So if the things are clear, then we can go ahead and can ask you a question, but before that question,
Okay, the question is now, this is your quiz number 2, I think. See, we have two different boxes. There is a box 1, there is a box 2, and box 1 contains 1000 parts, out of which 10% are defective. Box 2 contains double parts, 2000 parts, and out of these 2000 parts, 5% are defective. So my question is, if you go to these boxes, choose a box randomly. इमरान इधर फोकस करें, फिर आप पूछेंगे कि क्या सवाल क्या है. If you go to a box, choose a box randomly and then choose a part from any random box and you find it to be a good part, right? आप किसी एक बॉक्स की तरफ गए, उसमें से कोई रैंडम पार्ट निकाला और पार्ट जो है वो अच्छा निकल आया, then what is the probability that part has come from box 1, right? So you went to the box, choose a part is good, then give me the probability that it came from box 1. This is my question. You have 10 minutes.
Last 5 minutes. Last 1 minute. Last 30 seconds. See, the time is up. जमा कर लो. Okay, thank you. Okay, so
I'll bring this example back. Let's first discuss what could be the basic elements of decision problem, or more specifically a statistical decision problem, I should say. How to decide about some issue once we have more than couple of options. So we need to have set of hypotheses, means different possibilities depending upon the nature of problem. Could be a couple of probabilities, a couple of choices, or 3 choices, 4 choices. So all those hypotheses should be with you once you want to decide something. Then you have to have a test which will allow you to now go for any of the hypothesis, and then a decision rule. A decision rule have to be something which will operate on the data which you have obtained by virtue of the test, and maybe how you have created the hypothesis. And then there is an optimality criterion which will let you decide most optimally which hypothesis is correct. So these are the basic elements of statistical decision problem. And in all of these things, the primary role is done by, or primary role is played by the probability theory and the associated rules and stuffs, which must be known to someone. Only then he is able to decide in a positive fashion. So if this is in mind, I hope there is no issue in understanding of these things. It's quite clear. We go on to the Bayes theorem. Bayes theorem is one of the very important criteria. I told you that this is a mathematical foundation which gives you refinement of your old knowledge based on some experiments. So it's very much applicable to the decision to be made once you have more than couple of choices with you. So based on Bayes theorem outputs, you can decide most optimally which could be the best choice, right? So as I earlier told you, if you have the 2 random variables or 2 events A and B, then the probability of one event given the second event is available times the probability of B. It is same as if I do it other way around. Both are equal, and this thing in fact is the probability of A intersection B, and you will find out somewhere in some books it is written A comma B. It's one and the same thing. So a statement of theorem can be further refined, that if you want to know a probability of event based on some experiment carried out, if I relate it to the decision problem, then it would be equivalent to this thing, right? So it allows us to infer the conditional probability from the conditional probability of one type of probability which is conditioned on some event in terms of another conditioned probability, which is a sort of an inverse problem. So this Bayes theorem is very important, and now I'll go and apply this to a communication problem. So in a communication application, I may assume that SI is a signal class which can be transmitted through the communication channel. If I take a communication channel, say, and I have to have a transmitter as a basic element, then there is going to be a channel, and then we have a receiver on the other side. So what happens, you have to have some signal classes available here, especially in a digital communication system. You can have an option among different set of classes. The major difference between the analog communication and the digital communication is that you send a continuous waveform in both the cases, may it be analog, may it be a digital system. But in digital communication systems, the options are limited. You can either send 2 signals, or you can send 4 signals, or you can send 8 signals. So your signals has to be a power of 2. For a binary communication system, you have 2 signal classes. There would be S0 and S1. You will send a
0 by one signal and a 1 by another signal. There has to be some difference between the two signal waveforms, but they are continuous. They are continuous, right? So signal traveling across the two transmitters and receivers are continuous, but the options are limited. So that's make them an difference between the digital and analog communication. In analog communication system, the signal classes could be infinite. Whatever you are talking, it has to be converted to a form and it has to be transmitted by some means. So there are infinite waveforms which are possible for analog system, but for digital system we have to have some limited number of possibilities. So say I just told you that, okay, and of course the job of receiver is to receive those signals. If I assume it to be a simplified binary communication system, then S0 and S1, the transmitter will transmit either of these two. A 0 comes, then this one, and a 1 comes, then this one. The job of receiver is to identify which waveform is being received by me. Again, it knows that I can only receive two waveforms, so I have to just make a choice. It means I have two hypotheses, a hypothesis H0 and a hypothesis H1, and I have to decide based on some test and optimality criterion kya cheez I have received. So I should write it correctly and do not make any error. And here comes the Bayes theorem, which makes these decisions easy. So if I just tailor the Bayes theorem based on this system, which can be complicated, can be the complications or complexity can be increased from a binary system. It could be made to any type of complex scheme in which m are more, but the basic principle will remain same. You have to make all these things जो कि हमने पहले decide किए. So if I just make a decision or convert my Bayes theorem, so I can write down my Bayes theorem as something like this. I have a signal class to decide based on the experiment which I carry out, and it is the data which I have received, where I can be my number of signal classes from 1 to m could be anything, and j again is as many samples or as many values which you can take. That depends upon your testing criteria. So here my denominator is the total probability. The p of zi at the moment I can just take it as p of dj, and it will be the summation of So in the communication application, this SI is the ith signal class from a set of m classes. ऐसे ही SI is one signal class out of m signal classes. तो अब डिपेंड करेगा कि आपका कम्युनिकेशन चैनल जो है या सिस्टम जो है वो कितने अरी है. m अरी, what is the value of m? It's a binary, it is a 8 array, or it is 64 array. Whatever the value of m is, out of those signals SI is one of the type, and Zj is the jth sample of a received signal. In fact, जैसा मैंने आपको बताया कि SI is the signal classes which you have already decided about. अगर binary system लें तो सिर्फ S1 और S0 possible है, और Zj जो है ये आपका actual received signal है at the receiver, because the decision is being made at receiver side. So Zj is the actual received signal, right? So this requires to do or make use of this expression, we need to conduct an experiment. Or experiment is something like this.
that you send the S0s and you send the S1s by means of the transmitter through the channel, and the receiver also knows that I am receiving or I am being sent with S0, so I am receiving some Zj. Now I am being sent with S1, again I am receiving some Zj. So receiver exactly knows what is being sent to me. मैं बात करना चाहता हूँ नसीम से, मैं उसको पहले बता दूंगा कि जी मैं अब आपको 0 भेज रहा हूँ. अब आप 0 को रिसीव करेंगे, और आप 0 को तो रिसीव नहीं करेंगे. इनफैक्ट चैनल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस SI को चेंज करेंगी, एंड आई कॉल इट दी N or the noise factor. So my Zj would be in fact added up with some extra stuff which I have not sent, but I know that this Zj in fact is based on S0. This I know. Again another Zj is based on S1, because I have been told कि आपको मैं भेज ये रहा हूँ, now you find out कि आपको क्या मिल रहा है. That is how I will determine this particular effect which is there in between, which is maybe at the receiver transmission end, maybe at the transmitter receiver reception side. जो एंटेना के लॉसेज हैं या जो आपके सेट के इश्यूज हैं दोनों तरफ के, और जो आपका चैनल इफेक्ट डाल रहा है, वो सारा का सारा आई एम मॉडलिंग इट विद अ सिंपल फंक्शन ऑफ n. Although once we go in advanced studies we also say that there is a channel response h which gets convolved with Zj. That is another thing. उसके लिए we use an equalization filter to cancel the effect of h. वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे. But at the moment we are just modeling a system जिसके अंदर noise is being added which is unwanted, and we know कि हमने क्या भेजा था और हमें मिल क्या रहा है, right? So in this way we can conduct an experiment. So this is an experiment in which we will be sending something and will be receiving something, and will be making a database for that. So if you have cleared all this, so I can just simply say, yeah, let me just define it from same place with a different color, that this P of Si is a known probability, and we call it a priori probability. And for two signal classes, if those events are equally likely, this would be equivalent to 1 by 2. Either I can send a 0 or I can send a 1. So I know कि मुझे मिलने के chances जो हैं, रिसीवर को ये पता है कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो equal chances है. So P of Fi is the a priori probability, right? Whereas this side is again similar thing. I'm going to find out the probability of the same signal class, but based on some experiment being conducted. So this is called the posteriori probability. And this comes with the conditional probability, which is based on, it's a conditional probability. Now it will vary whether I am sending an S0 or I am sending an S1, but there would be two different plots or two different databases which can be created in case of a binary system. Once I send a S0 and receiving Zj's, I can send 1000 times Si, 1000 times. I'll receive a Zj which may be, say if I assume that Si is equivalent to -1 volt and S1 is +1 volt. So once I send S0 1000 times, I'll not receive -1 on the other side. I may receive -0.9 sometimes, maybe -0.8, maybe -1.2, maybe -5 some cases, maybe 0 in some cases. So there would be number of instances which I'll be having for 1000 -1 send. So I know कि क्या Zj है. So I can create something over here. What I can create, because this is a database, I know probability is working based on the number of events which I gather. So I can define the probability of Zj given S0 based on the data over here, right? So this is a conditional probability. I know what I am sending and what I am receiving. So I can come up with this conditional probability. In the similar way, once I start sending the S1, which is not -1, rather it's a +1, so I'll be receiving something else over here. Not exactly, maybe 1 भी कभी मिलेगा, sometimes 1.2, sometimes 0.8, maybe कभी 0 भी मिलेगा, maybe कभी -1 भी मिल जाए शायद, depending upon the channel condition.
how much channel is deteriorated. So again I'll get another Zj. This would be called Z1, this would be called Z2. This is based on the data being S0, this is based on the data being S1. और इससे ज़्यादा हो सकते हैं कि इतने आपके चैनल में सिंबल्स हैं पॉसिबल, उसके लिहाज से दिस ऑल ZJs कैन चेंज. बट एक टाइप ऑफ सिग्नल के लिए आपको मल्टीपल ZJs मिल सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं और Z2 भी कंडक्ट कर सकते हैं. तो फॉर बोथ ऑफ दीज केसेस आई कैन मेक दिस प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्टेड और समथिंग जो हम अभी थोड़े आगे इस एग्जांपल में देखेंगे भी. सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस थिंग इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. बिकॉज दिस ZJ लो अगर ये डेटाबेस में 2 के लिए क्रिएट करता हूँ, देखिए अब इस केस में पॉसिबिलिटी ये है कि जो पहला वाला केस था उसमें भी एक ऐसा नंबर आ रहा है कि जो दूसरे केस में भी लाई कर सकता है या दूसरी की रेंज में जा सकता है, राइट. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी विच इज नॉट इंडिपेंडेंट. इट इज बेसिकली you have the S1 and S0 and this ZJ may lie in both the surfaces. Let me do it over here. You have the single classes, आप या तो S1 भेजते हैं या S0 भेजते हैं, right? And your ZJ which you receive, it is in fact lies in both the. कभी ZJ -1 भी आता है S0 के लिए और उसी S0 के लिए वो +1 भी आ जाता है कि चैनल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, how much channel is खराब और wrong. So this is something. So whenever I am going to find out the probability of Z, it has to be a total probability because it lies in both the surfaces. So if this thing is okay, fine, then let's do, rather I should just do the example which I just gave you as a quiz. Let's do that example first and then we'll move forward how to use it in a channel now. So I just, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको example दी थी, मैंने आपसे कहा था कि there are 2 boxes. One box contains 1000 parts out of which 10% are defective. Then box 2 is another one. B1 में आपके पास 1000 हैं, 1000 में से आपके पास 10% डिफेक्टिव है. B2 में आपके पास 2000 हैं, 5% डिफेक्टिव है. I told you, okay, you go to a box, choose a part randomly, and if that part is a good part, then find me or tell me that it came from box 1. It means I am interested in finding the probability of box 1 given the part is good. This is what I want, right? So by my Bayes theorem I can simply write it down that it would be probability of good part provided from box 1 into probability of box 1 divided by probability of good part, because good parts are in both the boxes. I have 2 boxes, यहाँ पे भी good part है, यहाँ पे भी good part है. तो जो P of G है या P of GP है, it has to be a total probability, right? So अगर ये bad parts 10% are defective, so it means 90% are good. 5% is defective, it means 95% are good, right? So I have the probability here based on the boxes. So if I just start doing this thing, so first thing out of this expression I need to find कि मुझे ये चीज़ निकालनी चाहिए. So this thing probability of good part has to be, ये उसका एक part है, second plus होता है इसके साथ. So I can write it down that the good part from box 1 into probability of box 1 plus probability of good part from box 2 into probability of box 2. This is my total probability, and now I know all these values. How? This thing is known. ये देखिए box 1. We know the probability of good part from box 1 is 0.9, right? And probability of box 1, of course, 2 boxes हैं तो it is 0.5, 1/2 plus probability of good part from box 2. जी इमरान क्या है? 0.95 हो जाएगी. Multiplied by box 2 की probability क्या है? Again 0.5. So I can get an answer for this, which is the probability of good part, and if I tell you the answer, it is 0.925, which I get 0.925. So overall probability good part की है 92% based on the 2 different boxes, right? And out of it, now I can go and complete this part. इसमें I have obtained this thing. This is 0.925. I have this probability with me. ये क्या है? Naseem, what is the probability of box 1?
0.5. What is the probability of good part from box 1? 0.9. So I have all the values with me, and I can go and find out the requirement which I asked you, which would be now the probability of box 1 given the part is good is in fact 0.9 times 0.5 by 0.925. So this gives me an answer of 0.486. ठीक है जी. Whereas if I just consider the probability of box 1, that was 0.5, right? So now this is reduced. This is reduced based on some experiment. I have refined the probability. This is the refinement. It is lower or maybe higher. Depend करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं. So before the experiment, we choose a priori probability of having chosen either box 1 or box 2, and both were equally likely. Or once we obtained a good part, the Bayesian computation has given us a way of fine-tuning that information, which is not exactly the same. It is different, and we call it the a posteriori probability. This is the a posteriori probability. The earlier one, this one was the a priori. The word are commonly you will find it in common use in most of the communication problems and research papers. So we can use this thing to do some decisions, right? और वो डिसीजन जो है वो ये हो सकते हैं कि वी कैन इनफैक्ट एक तो हमारी कॉमन सेंस काम कर रही होती है. दिस इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ डूइंग इट. वंस इज़ अ कॉमन. अगर मैं आपसे वैसे जनरल पूछूं यार एक पार्ट निकाला है आपने और ये पार्ट जो है वो अच्छा पार्ट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ये बॉक्स, यानी ये बता दें कि क्या चांसेस हैं कि बॉक्स 1 का या बॉक्स 2 का है, तो आप इस डाटा के ऊपर बेस करते हुए क्या डिसीजन लेंगे कॉमन सेंस पे? बॉक्स 2 में से, क्योंकि बॉक्स 2 में जनरली ज़्यादा गुड पार्ट्स है, तो मैं ज़्यादा चांसेस यही है कि ये बॉक्स 2 का होगा. ठीक है. लेकिन बेस थ्योरम जो है वो फॉर्मली आपको ये डिक्लेयर करेगा कि येस इट इज़ फ्रॉम बॉक्स 2, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2, if I am gonna find out the probability of box 2 provided a part is good, this would be higher than the probability of box 1 given the part is good. So I can safely say कि यार go in favor of this, कि ये part जो है वो box 2 में से आया, right? So you can just think how now it can be, it means used in some other issues as well, अगर ये यहाँ पे apply हो रहा है, right? So let's take another example. Apply and do a decision based on maybe a betting game. Let's take, this is a good interesting example. Any question from this part जो मैंने पहले किया? नजमुल इस्लाम परेशान, कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किया लगता है. हाँ हाँ जी. अभी आपने गुड का क्वेश्चन किया, इसी तरह हम इफेक्टिव का निकालना चाहेंगे. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कैन ऑलवेज डू इट. उसको फिर हम ये 0.5 को कन्वर्ट करेंगे या 90% को लेकर जाएंगे? नहीं 90% तो नहीं, अब तो ये तो गुड पार्ट किया ना. उस केस में नाउ यू विल गो टुवर्ड्स दी डिफेक्टिव पार्ट्स, तो वहाँ पे 0.5 एंड 0.1 है, 0.05 एंड 0.1 है. जी मैं उसमें चलेगा 0.5 मैं क्वेश्चन करेंगे तो उसी में कर जाएगा. हाँ नहीं वो गुड, वो बैड पार्ट है. हाँ हाँ. Okay, let's take the this is now an example based on the decision theory applied to a betting game. So say we have a box which has 3 coins. We have a box, it has 3 coins. A coin 1, a coin 2 and a coin 3. There are 3 coins, out of which one is a fair coin. Fair coin means it has a head and a tail. There is a 2-headed coin, both sides heads, right? And there is a 2-tailed coin, both sides are tailed. ठीक है. तो आपने एक पुरानी एक मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी है?
जिसमें दोनों साइड पर, अभी भी बहुत सारी मूवीज़ में इस तरह की स्टोरीज होती हैं कि डिसीजन लेने के लिए आपने कॉइन को टॉस करना होता है और जो सेक्रीफाइसिंग किस्म का दोस्त होता है उसने ऐसा कॉइन रखा होता है जिसमें दोनों तरफ उसके फैसले के मुताबिक चीज़ आती है। अब जो भी टॉस करें तो वो हील से कि टेल ही आएगी, इट वोंट अपीयर, नेवर अपीयर द हेड। So it is something like this: a fair coin and a two-head coin and a two-tailed coin. And you are asked to pick one coin at random. Go and pick one coin. जी नजम भाई। ओके, तो आप पहले C2 मुझे कैसे बता रहे हैं? आपने तो पिक करना है, आपको क्या पता क्या आएगा हाथ में? कॉइन पिक किया, कोई सा भी कर सकते हैं। तो फिर नहीं आपको पता ना कि कौन सा आएगा, लेकिन एक रैंडम में आपने कोई भी एक कॉइन पिक करना। माय क्वेश्चन इज जस्ट गो एंड पिक अ कॉइन एंड देन लुक एट वन साइड ओनली। आपने कॉइन पिक कर लिया, एक साइड देखी, सिर्फ ये साइड देख ली, एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू, ओके गेस व्हाट इज ऑन द अदर साइड, guess what is on the other side. So what could be the most optimal decision strategy for this game? Interesting? बैटिंग गेम है, आपको पता है कि इसमें 3 कॉइन्स हैं, फेयर भी है, हेड भी है, टेल भी है। नाउ आई गो एंड पिक वन कॉइन, सी वन साइड एंड आई विल स्टॉप यू। ओके जी, नाउ लीव इट, गिव इट टू मी। आपको 10 मिलियन रुपीज मिलेंगे, गैस करें सेकंड साइड पे क्या है, और अगर नहीं कर सके, अगर सही कर दिया तो 10 मिलियन आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप 10 मिलियन मुझे देंगे। तो नाउ व्हाट शुड बी दी बेस्ट डिसीजन विच यू शुड मेक? पहले कॉमन सेंस पे आप सवाल करता हूं मैं, देन विल मूव ऑन टू दी बेजियन एंड अप्लाई इट ओवर देयर फॉर्मली एंड सी हाउ एंड व्हाट रिजल्ट आई गेट फ्रॉम द बेजियन। सो फर्स्ट लेट मी आस्क यू कि आप क्या करेंगे इसको। लेट्स आस्क वन बाय वन। जी इमरान, आपका नाम सॉरी क्या है? हसीबुल्ला। जी हसीबुल्ला, आप बताएं पहले। हाँ, ये तो अभी आप ही, मैंने तो आपको कहा ना, आपने पिक कर लिया और आप गए और आपने जाके जो है, अब आप मुझे बताएंगे आप जो है वो क्या आप समझते हैं कि क्या चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो ये डिसीजन करने में हेल्प करेगी, वो तो आपने मुझे बताना है। आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएं ना, तीनों चॉइसेस आपके पास हैं, अब आप गए और से आपका बात ठीक है, क्या करना चाहिए अभी मुझे, मतलब वही आप बताएं कि पहला चीज़ क्या है जो मुझे डिसीजन करने में हेल्प करेगी। राइट, ओके, ही इज़ वेरी 100% राइट कि जी पहले तो मैं वो साइड देखूंगा, ठीक है, साइड क्या आई है, ठीक है, ओके। से अज्यूम कि द साइड इज अ हेड, आपके ख्याल में टेल के साथ चांसेस, से अगर टेल नजर आई आपको, क्या इसके अलावा कोई चीज नजर आ सकती है? इट हैज टू बी आइदर हेड और टेल ऑन बोथ साइड्स, बट यू नो कि इसके अंदर जो है वो 2 हेड कॉइन भी है, एक फेयर कॉइन भी है, 2 टेल्ड कॉइन भी है। तो आप अब बेस्ड ऑन आइदर हेड और अ टेल यू विल मेक अ डिसीजन कि जी ये क्या चीज है। ही सेड के जी अगर मैं हेड देखूंगा तो टेल है, टेल देखूंगा तो हेड है। इमरान खान, हेड होगा चांसेस, और अगर टेल है तो नहीं, आपने मर्जी से कॉइन चूज नहीं करना है, आपको ये नहीं पता कि मैंने 2 हेड कॉइन ही उठाया है, ये तो सवाल नहीं है मेरा। आई हैव टोल्ड यू अ रैंडम कॉइन यू हैव चोजन एंड यू हैव सीन वन साइड, यू नेवर नो कि इट्स अ फेयर कॉइन, इट्स अ 2 हेडेड कॉइन, इट्स अ 2 टेल्ड कॉइन, ये आपको पता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो भी कॉइन पिक करेंगे उनमें से जब एक साइड देखेंगे तो हेड या टेल होगा। तो माई क्वेश्चन इज अगेन, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे आप बताइए, ठीक है, हेड आपने देखा कि जी हेड है, तो अब आपका क्या गैस है सेकंड साइड पे क्या है? $10 मिलियन मिल रहे हैं आपको, आप भी टेल के हक में, और अगर टेल हो तो फिर हेड होगा। जी नसीम, आप क्या कहते हैं? दूसरे लोगों को नहीं देखना, आपने अपना ही काम करना है, दूसरे लोगों को इतनी ऑप्शन नहीं है कि दूसरे का डिसीजन। आप तो कंफ्यूज, नहीं तो आप ये बाकी लोग इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है अभी, वो उस वक्त तीनों के तीनों कॉइन अंदर ही हैं, ये नहीं कि आपको ये नहीं पता कि जी वो पहले कॉइन पिक हो चुका है तो उसमें क्या था उसको मैं पहले देख लूं, फिर नहीं, ये फ्रेश एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड। आप गए 3 कॉइन से एक उठाया, देखा एक हेड था या टेल थी, अब आपने बताना है जी
कि अदर साइड पे क्या था? व्हाट वाज ऑन द अदर साइड? टेल होगी, और अगर टेल देखा है तो अच्छा जी। अब आबिद हेड आया तो हेड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और टेल आई तो टेल ही। रैंडम उठा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं पेयर वाला ही उठाऊंगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। जब पेयर में एक ही है ना, उसमें मैं उठा रहा हूँ तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरी साइड वही हो। टेल में दोनों टेल है, मैं कोई भी उठाऊंगा तो मेरे भी दूसरी साइड में टेल ही हो। सही, थोड़ी सी लॉजिक है। ठीक है। अच्छा आपकी बात आपने आपने इस तरह कह दिया, ठीक है फाइन, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है जी। आप इरफान हेड और टेल दोनों जो हैं वो चूंकि 50% है, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अगर एक बार हमारे पास हेड आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम टेल की जो है वो नेक्स्ट टाइम नहीं है, इसमें अपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन है। आपने एक साइड देख ली है, दूसरी साइड के बारे में गेस करना है कि उधर क्या होगा। इसमें सर ऐसा कि 50% में क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है हेड की, अगर हमने हेड उठा लिया 50% में से, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास टेल की फिर नेक्स्ट टाइम तो है ही नहीं इसमें। उसी कोई भी दूसरी तरफ जो है ना हाँ क्या टेल की प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा रहेगी? आप ये कह रहे हैं कि जी मतलब आप यू आर विद इमरान एंड दी अदर गाइज कि हेड है तो टेल होगा, टेल है तो हेड होगा। हाँ जी आपका नाम क्या है? सलीम। हाँ जी सलीम, आपने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजी है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो आप बताओ आपका क्या फ़ैसला है जी? हाँ लेकिन $10 मिलियन लूज़ कर जाओगे अगर आप सही नहीं डिसीजन किया तो। इट्स अ ह्यूज मनी। हाँ देने पड़ेंगे, तो इसलिए तो कह रहा हूँ फिर तो और ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए कि यार मैं फिर ठीक करूँ डिसीजन। आप कहेंगे जी हेड है तो टेल है, टेल है तो हेड है, ऑपोजिट साइड पे। अच्छा चलो आपकी ये है जी। डॉक्टर साहब अभी जो आए हैं, आपका नाम क्या है? इकबाल जी। इकबाल साहब हमारा क्वेश्चन ये था कि एक बॉक्स के अंदर 3 कॉइन्स हैं, एक फेयर कॉइन है, एक 2 हेडेड कॉइन है, एक 2 टेल्ड कॉइन है। आप जाते हैं कोई एक कॉइन पिक करते हैं, एक साइड देखते हैं और आप गैस करें कि दूसरी तरफ क्या चीज़ होगी। तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप गए, आपने एक कॉइन पिक किया और उस तरफ हेड था, तो अब आप बताएं अगली साइड पे क्या होगा? What could be the most optimal decision from your side? We had in fact started off with a theory on decision theory, how we can decide optimally about something. आपने हेड उठाया तो दूसरी तरफ हेड होगा, और अगर आपने उठाया टेल, टेल आई एक तरफ, फिर भी हेड होगा। मतलब आप हेड के हक में हैं जी। इन एनी केस जो भी आएगा एक तरफ दूसरी तरफ हेड ही होगा। अच्छा नहीं तो फिर तो आपको ये कहना चाहिए ना कि हेड आया तो दूसरी तरफ टेल होनी चाहिए, टेल हो तो हेड हो। अच्छा हाँ जी नजमुल इस्लाम, आप क्या कहते हैं? इसमें जो समझ आई है वो ये कि अगर एक हेड निकल आया है तो टेल की जो है वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, हेड ही होगा। अच्छा और दूसरा केस अगर टेल आपके सामने आ जाती है? सर इसमें ऐसे हो जाता है कि अगर एक हेड आ गया तो उसके बाद टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसमें जहाँ तक ये कहेंगे कि वो कम हो जाएगी। ठीक है 50-50% दोनों इसमें चांसेस हैं। अगर एक चीज़ निकल आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड कम हो जाएगी, जैसे टेल की अगर आ गई है, हेड की तो आप कह सकते हैं दूसरी साइड पे भी वही होगा, अगर हेड आया तो आप कह रहे हैं दूसरी तरफ हेड होगा, हेड ही होगा। और अगर टेल आई तो? सर जो टेल ही होगा वो 50-50% है ना। जवाब दो ना, अगर टेल आई तो वो दूसरी तरफ टेल भी हो सकता है दूसरी साइड पे, हो सकता क्या? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी है वो तो कुछ भी हो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जी आपने देखा हेड, तो आप कह रहे हैं सब दी।
Why you are confused? I'm just asking जी, you seen? वो जस्ट टेल होगी। आप कह रहे हैं जी टेल देखी तो दूसरी तरफ भी टेल होगी, और हेड देखा तो दूसरी तरफ भी हेड होगा। आपके दिमाग में ये एक कॉमन डिसीजन आ रहा है। हाँ जी। तो अगर हमारे पास हेड निकल आता है तो टेल के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक साइड जो अनफेयर कॉइन है उसके दोनों तरफ टेल है, वो तो खत्म हो गया, एलिमिनेट ही होगा, उसके चांस ही खत्म हो गए। तो जो फेयर कॉइन है अगर लेट्स से तो उसकी तरफ से फिर मुझे 33% चांसेस रह जाते हैं, वो आएगा, और हेड के चांसेस जो है 66.something% आ जाते हैं। तो मैं हेड की तरफ जाऊँगा अगर पहले मैं हेड देखता हूँ, और अगर टेल देखता हूँ फिर मैं टेल की तरफ जाऊँगा। ठीक है, ही इज़ अ बेटर। कहाँ पे कर सकते हो बैटिंग? लेट्स सी, अभी लेट्स फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। लेट्स सी किसका हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं कि क्या कौन ठीक कह रहा है। सो इनफैक्ट इस डिसीजन के अंदर मैं अपने बात में बताऊंगा। तो ओके, हियर आई हैव दी 3 हाइपोथेसिस। इनफैक्ट आई कैन से कि जी मेरे पास एच आई यहाँ पर मैंने डिसाइड करना है, एंड एच आई कुड बी एच फेयर, कि जिसमें टेल और हेड वाली ऑप्शन होती है। इट कुड बी ऑल हेड ऑप्शन, ठीक है, जिसमें हेड और हेड ही हैं दोनों तरफ, एंड इट कुड बी एच टी ऑप्शन, जिसमें दोनों तरफ टेल है। तो एच आई मेरे पास या तो फेयर की ऑप्शन है, या मेरे पास हेड की ऑप्शन है, या मेरे पास टेल की ऑप्शन है। 2 हेडेड कॉइन, 2 टेल कॉइन और फेयर कॉइन। तो ये तीनों में से मैंने डिसीजन लेना ना। डिसीजन यही है कि जी अभी जो कॉइन आया ये फेयर कॉइन आया, या ये 2 हेडेड कॉइन आया, या ये 2 टेल कॉइन आया, ठीक है। सो इट मीन्स आई हैव टू गो एंड कंप्यूट दी अच्छा, अब यहाँ पे जो रिसीव्ड सैंपल है मेरे पास, आई कैन जस्ट टेक इट एज अ सिग्नल क्लासिफिकेशन टास्क। मुझे जो ZJ मिला है वो इट कुड बी आइदर अ हेड और अ टेल, कोई एक चीज़ नजर आएगी ना जब आई विल पिक इट अप। सो आई कैन से ओके जी माई रिसीव सैंपल इज J इक्वल्स टू H और T। सो माई ZH in fact once I have received or I have seen a head, and ZT is once I have seen one side as a tail. I can call it like this. Okay, so अब अगर मैं इसको बेस थ्योरम के ऊपर लेके जाऊं तो आई कैन सिंपली से कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ HF is equal to the probability of HH is equal to the probability of HT 1/3, सबकी बराबर है। कोई भी जब आप एक पहले जाके कोई डिसीजन करते हैं तो यानी इनफैक्ट दिस इज दी डिसीजन बिफोर यू हैव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। अभी तो आपने जाके उनमें से कोई एक चीज़ देखी है ना, फिर डिसीजन कर रहे हैं, तो ये उससे पहले वाला है। तो आई कैन कॉल इट कि माई ए प्रायरी प्रोबेबिलिटीज आर ऑल इक्वली लाइकली एंड दे आर द सेम। बिफोर आई पिक इट्स इक्वल ना, कुछ भी निकल सकता है। बिफोर आई पिक एंड सी इट कुड बी एनीथिंग। तीनों में से चांसेस इक्वल है तीनों उठाने के मेरे, तो दिस इज सेम। बट नाउ नेक्स्ट आयल जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ये है कि ओके टेल मी I have received a ZH और a ZT। अब बताइए कि जी HF या HH या HT की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर ZT नजर आता है तो HH, HF और HT की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आई एम गोइंग टू फाइंड इट आउट। और मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा भी है मैथमेटिक्स में, अभी जो मैंने आपसे जो कोट किया था वो दैट वाज दिस प्रॉब्लम। सो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स सी हम पहला केस ये करते हैं कि जी आई हैव गॉट अ हेड, सो लेट्स फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी कि जी अगर मुझे ZH मिल गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस चीज़ की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी फेयर के बारे में, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा डिसीजन टेल वाले के हक में जाए, ठीक है। और सेकंड केस में अगर मुझे Z टेल नज़र आ गई है, यानी जो एक्सपेरिमेंट मैंने एक साइड देखी है वो टेल है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है फेयर की अगर ये टेल नज़र आई है क्या प्रोबेबिलिटी है 2 हेड की, क्या प्रोबेबिलिटी है सॉरी इट शुड बी T की अगर ये ZT नजर आए। These are in fact my computations which I am gonna make, right? So let's come on to the fair one। पहले fair वाले को देखते हैं, ठीक है। So as per the Bayes theorem, what should I write down in the numerator and denominator? कौन बताएगा?
आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ZH तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ZH गिवन के HF है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ HF आ जाएगा। अच्छा ये तो पता है मुझे, बाकी दो नहीं पता। इसके लिए मुझे अब कुछ देखना पड़ेगा जी कि ये वाला केस कैसे मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। सो इफ फॉर जस्ट फॉर अ टाइम बिंग सिमिलरली चलिए इनको भी लिख लेते हैं ताकि मुझे एक दफ़ा ही पता चले कि क्या चीज़ रहती है। अब यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ निकालनी है और इधर मैंने निकालना है ZH गिवन के ये डबल हेड कॉइन है और देन आई हैव टू गो फॉर द डबल हेड प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने जाना है तो अगेन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसकी सेम क्वांटिटी and the numerator I have ZH given it's a tailed case into tailed case. अच्छा, in all of these things if I can just say कि जी I know this, I know this, I know this, these are known। इसके और इसके बारे में थोड़े से अभी हमने कंपेरिजन करनी है। तो अब इसमें हम क्या चीज़ ऐसी है कि जो हम वर्कआउट कर सकते हैं, we have to see that। और as I told you in the discussion earlier that this thing is based on the experiment which you conduct. So if I just go here and see okay, say I have a case where I'm going to compute my probability of ZJ based on HF because इसमें मैं interested हूँ। सो फेयर कॉइन के केस में टेल और हेड ये इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है ना। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 1/2 है ना, 0.5 0.5 है, ठीक है। आई कैन से दिस ओके। अच्छा अगर मैं यही चीज़ निकालना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ZJ फॉर 2 हेडेड कॉइन तो टेल और हेड क्या प्रोबेबिलिटी के टेल होगी, क्या प्रोबेबिलिटी के हेड है, ये 0 होगा और ये 100% है कि ये तो होगा ही, यही होगा। वेयर एज थर्ड केस में जिसमें वी आर गोना फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ZJ बेस्ड ऑन दी टू टेल्ड कॉइन, दिस इज गोना बी 1 एंड दी हेड ऑप्शन इज गोना बी 0। तो देखिए अब मुझे इसका मतलब ये है फ्रॉम दीज थिंग्स आई कैन सिंपली से, अगर मैं अभी अपने पिछले वाले केस में फेयर कॉइन वाले केस पे चला जाऊँ तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z हेड है गिवन इट्स अ H फेयर 0.5 है ये, क्योंकि दोनों आ सकते हैं। और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ Z टेल गिवन इट्स अ फेयर कॉइन इज अगेन 0.5। और है आई हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड गिवन इट्स अ 2 टेल्ड कॉइन इज 100%, where a probability of getting a tail provided it's a 2 headed coin is 0. Probability of getting a head provided it's a 2 tailed coin is 0, whereas probability of getting a tail given it's a 2 tailed coin is 100%, right? So now I have obtained certain things. Let me again go and write down those values. I am interested in probability of getting the जो question था, sorry that was, if I show you this slide previously, this one is required, right? So इसको यहीं पे करते हैं चलें। So I am interested से पहले इसको हम इधर निकालते हैं। So now if I just tell you कि क्या क्या चीज़ मुझे मिल गई है। अब इसमें मुझे ये चीज़ पता चल गई है, ये चीज़ पता चल गई, ये चीज़ पता चल गई है। नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, मैंने ये चीज़ निकालनी है अभी, राइट? दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वी नो दिस इज बेस्ड ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पर ये दिस इज रिक्वायर्ड कि मुझे दिस हैज़ टू बी कंप्यूटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z हेड गिवन इट्स अ फेयर कॉइन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन प्लस probability of Z head given it's a 2 tailed coin into probability of 2 head coin plus probability of Z head given it's a 2 tailed coin into probability of 2 tailed coin। ये total probability है जो इसमें ये इसके अंदर हमें निकालनी जानी चाहिए। So now I know the individual values. This value is
probability of getting a head provided it's a fair coin is 0.5 into 1 by 3 plus this probability is 1 into 1 by 3. This probability is 0 because this answer is 0. So I get an answer equals to कंप्यूट करें ना इसको, क्या जवाब आता है आपका? 0.5 आ जाएगी, चलें जो भी आ जाएगा, इधर एक आंसर आ जाएगा, बट वी नो ये वैल्यू आ जाएगी। और अभी आपकी बात अगर मैं मानूँ चले 0.5 आ जाएगा, 0.5, दिस इज 0.5। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड कंप्यूट दी वैल्यूज। पहले ये निकालते हैं, दिस वैल्यू इज 0.5 टाइम्स 1 by 3 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। एंड द आंसर विच आई गेट फ्रॉम हेयर, थोड़ा सा स्टफ ज़्यादा हो गया, लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज हेयर। सो आई एम गोइंग कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ fair decision based on head. This gives me an answer of, this was 0.5, this was 1 by 3 divided by, as you told me, this is 0.5. So the answer which I get out of it is 1 by 3. ठीक है, कैंसिल हो जाते दोनों। Okay, get for the other one, probability of HF provided, sorry, दूसरा वाला जो था that was head provided के z head, this was 1 into 1 by 3 divided by 0.5, the answer comes out to be 2 by 3, whereas probability of HT given ZH is 0। सही है? अच्छा जी, अब by look of it, which probability out of these is the highest? जब आपने z head देख लिया है तो ये जो probability है कि दूसरी साइड पे tail होगा, it is lesser than के दूसरी साइड पे head होगा, this is higher value ना। so the answer decision is correct, that we must go with the two-headed coin if we see one head on one side। ठीक है इमरान, नसीम, अगर आपने हेड देखा है तो आपको जो आपका सबसे ऑप्टिमल डिसीजन है वो ये है कि जी दूसरी साइड पे भी हेड ही है। आबिद इज ऑल्सो करेक्ट, आपने दूसरे केस में कंफ्यूज कर दिया था, फिर अभी हम दूसरे पे भी आते हैं, टेल वाले पे भी आते हैं ना। सो लेट्स डू दी अदर वन। से हमें क्या नजर आया जी? टेल नजर आ गई है, टेल नजर आ गई है। अब प्रोबेबिलिटी के ये फेयर कॉइन है, प्रोबेबिलिटी के ये टू हेडेड कॉइन है, प्रोबेबिलिटी के ये टू टेल्ड कॉइन है। लेट्स सी अबाउट दिस। सो दिस थिंग इज, इफ आई गो एंड कंप्यूट, दिस कम्स आउट टू बी, अगर इसी एक्सप्रेशन को यूज करें 1/3 आंसर आएगा। दिस शुड बी 0, क्योंकि ऐसा चांस ही नहीं है कि टेल और दूसरा हेड तो हो ही नहीं सकता अगर ये टू हेडेड कॉइन है तो। और यहाँ पे आपके पास आंसर आता है अगेन 2/3। सो अगेन द डिसीजन इन फेवर ऑफ द tail on the other side, right? So decision can be made simpler with the help of common sense, but common sense is supported by mathematical computation. Common sense, जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी, ये आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि जब आपने एक कॉइन पिक कर लिया और कॉइन पिक करने के बाद आपने उसकी एक साइड देखी, वो हेड आ गया, तो अब जब हेड आ गया तो ये जो अंदर तीन ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो गई कि अब ये टू टेल्ड कॉइन नहीं है, ऐसे ही है ना। बाकी ऑप्शन क्या बच गई? या तो ये टू हेडेड है या ये फेयर है, ठीक है। अब आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शन 3 हेड हैं। जब आप 2 में जाते हैं, 2 में 4 ऑप्शन बन जाती है ना, कि एक तरफ हेड टेल है या दोनों हेड है, तो 4 में से 3 जगह हेड है, एक हेड आप देख चुके हैं, बाकी 3 ऑप्शन बच गई हैं, 2 हेड की है और एक टेल की है, तो ऑटोमेटिकली यू शुड फेवर दी हेड, कि हेड के ज्यादा चांसेस हैं। समझ आई? प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। गलत तो हो सकता है, आप जो है ना जैकपॉट अल्लाह की तरफ से लगवा के लाए हुए हैं, तो एक अलग चीज़ है कि आपको फिर भी टेल निकल आए,
लेकिन ये कि आपकी गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारा एम क्या होता है कि वी ट्राई टू रिड्यूस दी एरर चांसेस कम करें। हो सकता है कि आप लकी हैं, आप ठीक हो जाएं, आगे आपके आने वाले 10 लोग अगर यही फैसला आपके मुताबिक करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 9 इस वजह से ठीक हो जाएंगे, एक शायद गलत भी आ जाए लेकिन वो कम होगा चांसेस। ठीक है, इन दी सिमिलर वे अगर आपने टेल देखी तो इट मीन अंदर हेड, या हेड वाला कॉइन तो है ही नहीं, फिर अंदर जो है 2 कॉइन्स बच गए। एक टेल आप देख चुके हो, बाकी पॉसिबिलिटी 2 टेलों की और एक हेड की है, तो यू शुड फेवर द टेल कि यार ये दूसरी तरफ भी टेल ही होगी तो गलती कम होगी। तो दैट इज सपोर्टेड बाय द अदर ऑप्शन। तो बेस थ्योरम सेटिस्फाइज योर इंट्यूशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बेटर एंड अ बैड बेटर, कि आप गलत डिसीजन जज्बात पे नहीं करते हैं, सोच समझ के करते हैं। तो देयर इज नथिंग बेस्ड ऑन दी okay, so this is how this thing, or in fact this gives us the satisfaction, okay ji, the Bayes theorem is in fact something which is being used and can be applied. So now let's take a specific communication case and a problem. Let's see how it is applied over there. So I am just taking two signal classes S1 and S2 now. थक तो नहीं गए कहीं? So all fine जी। इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं? 5 मिनट की ब्रेक कर सकते हैं आप। वी कैन हैव, बिकॉज इट्स 11 o'clock, कैन हैव ब्रेक ऑफ 5 minutes, वी मीट अगेन। ठीक है, तो ताकि इसको फिर हम फ्रेश तरीके से एक दफ़ा करें। रिज्यूम्ड नाउ। आई होप साउंड, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? ओके Okay, so let's take, so as I told you, let's consider two signal classes to get a good understanding of this concept, S1 and S2. They are two signal classes which may be characterized by a triangular shaped conditional probability functions, or PDFs, PZS1 and PZS2 in this way. For example, I can draw, and I'll tell you how I have drawn it. This is my conditional PDFs. Here I have the probabilities, so they go from point 1, point 2 with the difference something like this until reach till 1. And on the x-axis I have the received sample Z. I can plot it something like this, that this is my probability of Z given S2, and another one is something like this, which is probability of Z given S1. Okay, so this is known to me, and another thing which is known to the receiver is that the a priori probabilities are equally likely, that is PS1 is equivalent to PS2 equals to 0.5 या 1/2, because each of the class can be received with equal probability on the other side, and the receiver does not know which is being sent. But experiment has been conducted which helped the researchers or the designer to build this known probability function based on received data Z. How it has been created? Just थोड़ी देर पहले I have been telling you that you have been sending S1s and S2 and receiving Z's, and accordingly if you map it to our previous knowledge of building the PDFs,
we can draw that freehand curves, we can define the bar graphs, we can bring the histogram inside, and then we can draw the freehand curve, and this is what we get out of conducting that experiment, in which we sent multiple times S1 and multiple times S2. I hope this makes sense कि ये कैसे बनी होगी या बन सकती है, but we can make it happen. We must have made the frequency distribution. From the frequency distribution we divided by the number of occurrences to get the probability values, and so this is drawn. So this is the experiment, right? The initial probabilities are equally likely. Now the question is, say अगर तो ये दोनों curves जो हैं they would have been far away from each other, there is no overlapping, तो तब तो कोई डिसीजन करना मुश्किल नहीं होता, कोई भी एक z की वैल्यू मिलेगी. अब से इस पूरे एक्सिस पे z आपको टेस्टिंग के दौरान कुछ भी मिल सकता है, आपको इधर मिल सकता है, इधर मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, इधर इधर इधर, ठीक है. So whatever z you received, now my question is, if I receive a z, what is the probability कि ये S1 है या ये S2 है? This is my decision. These are the two hypotheses which I have to make, because during transmission anything can be sent. So job or receiver is to find out कि ये S1 भेजा गया था या S2 भेजा गया था. It does not have to reproduce the S1 and S2. Remember, in digital communication आपका काम या रिसीवर का काम ये नहीं है कि it has to कि जी S1 ये था तो मैं अब इसको रिप्रोड्यूस करूँ, मुझे पास आएगा मैं इसको रिप्रोड्यूस करूँगा, या मेरे पास ये S2 था तो मैंने रिप्रोड्यूस करना है. नहीं, उसने सिर्फ इसको पहचानना है कि क्या चीज़ है और उसने अपने पास लिखना है कि ये 1 है या 0 है. दैट इज़ ऑल हिज जॉब इज़. सो इन फैक्ट दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द अदर साइड कि यार ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, राइट, अगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं 0 के लिए इमरान को भेजूँगा और 1 के लिए मैं नसीम को भेजूँगा, तो अब अगर यहाँ से कराची तक आपको रवाना कर दिया जाए और वहाँ पे जब इमरान पहुँचे तो वो इमरान नहीं होगा जो इस टाइम पे बैठा हुआ है, ठीक है. अगर ये साइकिल चला के जा रहा है यहाँ से कराची तक तो कुछ और चीज़ बन चुकी होगी, ठीक है, और नसीम को भी भेजें तो वो भी कुछ और बन चुका होगा. तो अब वहाँ पे अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो इनकी शक्ल देख के वो अंदाज़ा करेगा कि यार ये ओरिजिनल इमरान भेजा गया है या ये नसीम भेजा गया है, ठीक है. अब मैं इन दोनों को जितना मुख्तलिफ करके डिसाइड कर सकता हूँ. माई पॉइंट इज, एक्सक्यूज मी, okay, just let me check the sound again, because sometimes I'm worried noise is not being sound is not being recorded. So it's working, right? So that's good. Okay, so my point is okay, now once we have to decide what is being transmitted, the job of a receiver is to decide which is being received by me. The thing which makes this job easier is to make the initial choices as different from each other as possible, so that whatever changes occur वो इतनी चेंज ना हो कि आपको आपस में मिक्स कर दे. अब इमरान और आपको अगर मैं 0 1 की जगह भेजूंगा तो चाहे आपको मैं यहाँ से अमेरिका तक भी साइकिल में भेजूंगा, आप जब पहुँचेंगे तो इमरान जैसा ही होना चाहिए और नसीम जैसा ही होना चाहिए, वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर से मैं डिसाइड करता हूँ कि जी कुछ मिलते जुलते बंदे जो है, ऐसे ओके जी आबिद को और आबिद जैसे इसका कोई भाई है उसको मैं 0 और 1 के तौर पे भेज देता हूँ, तो हो सकता है जब आबिद पहुँचे और उसका भाई पहुँचे तो दोनों की शक्लें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो चुकी हों पहुँचते, तो डिसीजन वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक कि ये क्या चीज़ है. सो बट दैट इज़ अनदर थिंग कि आप इनिशियल डिसीजन जो है वो डिफरेंट करें. लेकिन माई पॉइंट इज़ कि दिस इज़ नोन टू मी एंड नाउ आई हैव मेड दिस ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी एंड माई जॉब इज़ नाउ टू फाइंड आउट के बेस्ड ऑन सम रिसीव सैम्पल आई हैव टू मेक डिसीजन कि ये S1 है या S2 है. सो से आई टेक अ Z. For example, if I take ZA, which is somewhere here, for example, this is ZA, which I have received. There is a value, it could be something, I don't know what it is, but it would be some value, 1, 2, 2.5, 6, 7, -1, -2, whatever.
that I've represented at ZA. So once I take this ZA and then I define another one which is ZB, for example, here, so I can get the values of probability here, and if I extend it further, then here, and if I extend it further, somewhere here, right? So now अगर मुझे ये ZA भेजा गया है, so my point is, my question is, give me the probability that if ZA for example has been received, तो बताएं कि ये S1 है या ZA ही रिसीव हुआ है, बताएं कि ये S2 है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो Z रिसीव हुआ है ये Z दोनों की रेंज में लाई कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो डिसीजन हैज टू बी मेड। सो लेट्स अप्लाई द बेस थ्योरम एंड सी व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम देयर। सो एक चीज़ यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, वो ये निकाल सकता हूँ कैसे, फॉर एग्जांपल आई कैन सी कि ये वैल्यू क्या है, आई कैन सी कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इट मीन्स आई कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ZA, सॉरी इनफैक्ट ये तो ये चीज़ है ना कर्व में, थोड़ा सा जो मैंने था एक चीज़ एक मिक्स कर गया, वो ये था कि इधर आई हैव टू, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इट हैज़ टू बी S1 गिवन Z एंड S2 गिवन Z, क्योंकि हमने तो उसके बारे में निकाला ना। लेट मी करेक्ट दिस, जो डिसीजन है वो थोड़ा सा मैंने आई रोट इट अदर वे राउंड। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन Z और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन Z मिल गया। अब S1 या S2 के बारे में फैसला करना, तो ये ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज है, इनफैक्ट ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज। प्रायरी जो है वो मुझे मेरा इनिशियल डिसीजन है which is not based on any experiment, but now I've started receiving Z's, और उसके लिहाज से मैंने अब इसका जवाब देना है कि क्या चीज़ है। So first of all I'll go and find out the S1 given ZA. For this I can write it down that my right hand side would be ये चीज़ होगी। Who will agree कि this is right? ये मैंने कंप्यूट करना है, ZA रिसीव हो चुका है, अब मैंने डिसीजन लेना है, तो डिसीजन आई विल टेक ऑन द बेसिस ऑफ, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, कि अगर मेरे पास ZA के लिए ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, देन दिस प्रोबेबिलिटी, तो आई विल गो इन फेवर ऑफ S1, और अगर ये ज़्यादा आ जाती है तो फिर आई विल गो इन फेवर ऑफ S2, राइट। So by Bayes theorem I can write the right hand side. So let's write down the values. Probability of ZA given S1 is known to me. ZA given S1 is known to me. From where? From here. Probability of ZA given S1 in fact is this value, which is मेरे पास जो वैल्यू इधर आ रही है ZA given S1 की, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ, ये ZA given S1 नहीं है, ZA given S2 है। So this comes out to be this is ZA given S2। जब इसको मैं यहाँ पे आगे प्लॉट करूँगा, जो कर्व है ये Z given S2, यानी जब स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन हो जाएगी तो ZA given S2 हो जाएगी ना। So I get that value here as around 0.3, ठीक है। Whereas जो ये वाली वैल्यू है, दिस इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ZA given S1, ठीक है, ऐसा ही है क्योंकि इस कर्व के ऊपर है, मैंने कर्व उसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है। दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 0.5, दिस इज 0.5। so now these values can be plugged in here। so this is 0.5, this is 0.5,
ZA given S1 is again 0.5. This is 0.5 plus this is 0.3, 0.5. So the value which I get from here is, let me write down the answer, is 5/8 with me. ये आ गई है probability of signal 1 given a sample has been received. Second probability is now, I can write down again, it is ZA given S2 into probability of S2 by again the lower function as it is. यही वाली चीज़ सेम यहाँ पे नीचे आ जाएगी. I can replace the values. ZA given S2 is now 0.3 from the graph. This is 0.5 and lower one is the same. So the value which I get from here is 3/8. Acha, so now ZA has been received and I have computed the a posteriori probability. A posteriori probability जो बताती है वो ये बताती है, if I go back here, this ZA has been received and a posteriori probability is in favor of S1. ये जो है, this is higher than the other side. So my decision should be in favor of this one. यानी अगर मैं इस पिक्चर पे दोबारा जाऊं और ये वैल्यू Z की मिलती है मुझे, right? So I should go in favor of this side. There are two different signal classes. Maybe this is the mean value of signal class 1, this is the mean value of signal class 2. I can call it as A1, in this case A2, this is A1. This may be -1, this may be +1. अब ZA जो है वो अगर तो 0 पे आए तो उसमें भी ये जगह बनती है. ख़राब इतना हो गया कि वो ZA ख़राब होके बन गया है अराउंड 0.2, या ये A1 भी ख़राब होके इधर तक आ सकता है और ये A2 भी ख़राब होकर इधर तक जा सकता है. दोनों केसेस में जब ट्रांसमिट करें, द थिंग कुड बी ZA which whatever is it, but because 0.2 is closer to A1, my decision should be, a common decision should be, अगर मैं मैथमेटिक्स से ना करूँ, it should be in favor of S1. But mathematics also supplements my common sense कि ठीक है जी, अगर ये आपकी बात आप इसको common sense से नहीं करना चाहते, still you are getting the more value for this case. So your decision should be in favor of S1. Now let me take the other value. The other one is now ZB. Here is ZB, right? So my this is signal class 1 जिसकी average value, जिस तरह मैंने भी कहा कि हो सकता है -1 हो, इसकी +1 हो, right? So ज़्यादा probability जो है वो यही है कि noise अगर नहीं है तो वही signal आपको मिल रहा है Z की form में, और अगर noise है तो +- हो रहा है. ठीक है, because हमने ये कहा था कि जी Z in fact is the signal प्लस दी नॉइज़, और सिग्नल का जो एवरेज कंटेंट है वो A1 या A2 हो सकता है, यानी +1 या -1 हो सकता है फॉर अ बाइनरी क्लास, और नॉइज़ इसको ख़राब करके कहीं पे भी ले जा सकती है. अब ये ZA के केस में इज माई जस्ट हाइपोथेटिकल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 0 से प्लस साइड पे थी, 0.2 था, अब ZB थोड़ी और ज़्यादा प्लस साइड पे हो गई, इट इज़ अ 0.3 फॉर एग्जाम्पल, जो भी वैल्यू है हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन ZB इज शोन ओवर हेयर एंड ZB इज गिविंग मी द वैल्यू ऑफ probability on this curve. I can say that this is the probability of ZB given S2, which is something with me in my notes. This value is, this ZB given S2 is 0.1, almost 0.1 है ये, और जो ये वाली वैल्यू है, this is the probability of ZB given S1 and this is around 0.7. ऐसे ही है. So I can again go and find out the posteriori probabilities. मैं जाके निकाल सकता हूँ कि जी let's find out the probability of sorry, this is S1 given ZB and probability of S2 given ZB. So by the Bayes theorem, this becomes 0.7 times 0.5 by 0.7 times 0.5 plus 0.1 times
5, which gives me an answer of 7 by 8. Whereas this answer comes out to be 0.1 times 0.5 and lower figures are the same shown here. So this gives me an answer of 1 by 8. So देखिए probability value are now in more favor of this thing, because here if you go and observe the previous case, तो ये even ये difference बढ़ चुका है इनके दरमियान. This difference is more. It's more closer towards the average value of the signal class 1. So I can safely say here, based on the Bayes theorem, that if I get a ZB, it means I have been transmitted with S1. It's not S2. S2 cannot be this one. Right? So this we call, is this particular rule we can call at maximum likelihood rule. You must have heard ML rule in communication. The maximum likelihood rule is, it will dictating us कि जिसकी posteriori probability ज़्यादा होती है, you go in favor of that thing. So here we choose class S1. On the other hand, अगर इसी problem में मैं यहाँ पर कहूँ कि जी मुझे ZC मिला है इस जगह पे, so my general perception from these two numericals is कि here this one would be lower than this one. So I'll be going in favor of S2 instead of S1 once I go and compute the posteriori probability. So the confidence is increasing here from ZA to ZB. अगर यहाँ पे आ जाता है मुझे ZD इधर मिलता है, तो फिर तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये जो पॉइंट है ये तो आता ही इसी के ऊपर है, इसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है. देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का सैंपल हो. तो एज वी मूव टुवर्ड्स द एवरेज वैल्यू ऑफ सेकंड सिग्नल क्लास, आवर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस. बट टिल द टाइम आई एम इन दिस रेंज, there is gonna be some confusion, and the maximum confusion would be if I get a ZA equal to 0. In that case both the cases would be equal. और यहाँ I'll make an error. I have to now make a decision कि अब ये मुझे 0 मिल गया है. -1 जो था वो S2 के लिए था, 1 जो था वो S1 के लिए था, 0 मिल गया है. तो अब मैं क्या डिसीजन करूँ? So that is now the point of error. I may not correctly, I have to go in favor of anyone. So that would be the errors which I'll be making, which may be corrected, may be wrong. Right? So again, I hope this question is clear, so that I can go and define the decision rules now. जिस तरह मैंने आपसे भी कहा कि जी the Z value, whatever value I get at a sample at a time, once I'm sampling it, it is based on the average value of my original signal plus the noise at that time. So this may vary along the axis. अगर ये -1 था एक सिग्नल की एवरेज वैल्यू, +1 दूसरे की थी, तो अब ये जब नॉइज ऐड होगी तो ये Z इज अ मूविंग स्केल पे, कभी ये -1 के राइट पे आएगा, कभी लेफ्ट पे आएगा, कभी और आगे ख़राब होते होते हो सकता है इधर तक आ जाए. भेजा यही था -1 ही, लेकिन हो सकता है 0 से भी राइट साइड पे चला जाए और आगे भी जा सकता है. तो इधर जब जितना आप राइट पे जाएंगे उतनी गलतियाँ बढ़ती जाएंगी, जितना आप इस 0 के लेफ्ट पे रहेंगे उतनी गलतियाँ कम होंगी. ऑन द सिमिलर वे अगर 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका भी Z जो है वो इधर इस तरफ जा सकता है और इस तरफ जा सकता है. इट कुड बी एनीथिंग बेस्ड ऑन द नॉइज वैल्यू. सो नाउ देयर हैज़ टू बी सम डिसीजन रूल which would be required. So a most reasonable starting point for establishing this receiver decision rule for the case of two signal classes could be this one. We call it the likelihood ratio test. Likelihood ratio test and maximum a posteriori criterion. Once you will study the digital communication course, these terms would be used. We call this maximum a posteriori priority as map criterion. This is a map criterion, right? So the reasonable starting point would be this one, that your probability of S1 given Z, if it is greater than probability of S2 given Z, I'll go in favor of H1.
and if it is lower than this, I'll go in favor of H2. ऐसे ही है. This is called maximum a posteriori criterion. Maximum या MAP criterion. So this equation states that we choose hypothesis H1 if the posteriori probability S1 given Z is greater than posteriori probability S2 given Z, or otherwise we choose the H2, right? So now what we can do, we can replace the posteriori probabilities with their equivalent expressions from the Bayes theorem. We can replace these. We know from the Bayes theorem that this can be replaced with probability Z given S1 into probability of S1. This remain as it is. On the other side, this one. Now here we have the decision rule in terms of the PDFs. You remember this thing was obtained after the experiment. We drew the curves for these. हमने कहा हमने S1 भेजते रहे हैं, Z रिकॉर्ड कर रहे हैं, S1 भेज रहे हैं, Z रिकॉर्ड कर रहे हैं, H1 भेज रहे हैं, Z रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक PDF कर्व मिल गया हमें. फिर हमने कहा जी हम S2 भेज रहे हैं, Z रिकॉर्ड कर रहे हैं, S2 भेज रहे हैं, Z रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक और PDF कर्व मिल गया मुझे. तो ये जिसका प्रीवियस एग्जांपल में मैंने दो PDF प्लॉट की हुई थी, that was based on this experiment. So now these are the in terms of PDF. Now if we rearrange this equation, maybe and rewrite it, I bring all the a priori on the other side and the PDS on one side, so I get this thing. I will be able to write down that probability of Z given S1 so this thing in this particular equation, the left hand side term or the left hand ratio is known as the likelihood ratio. Left hand term is the likelihood ratio. अगर ये रेशो 1 से बड़ी होगी तो आप एक की फेवर में जाएंगे, छोटी होगी तो दूसरे की फेवर में चले जाएंगे, right? So this entire equation is called or referred as the likelihood ratio test. This is the likelihood ratio test, इसको नाम दिया जाता है. And it can help us to make decision based on the comparison of measurement of a received signal to a threshold, because this will be a threshold. अब इस केस के अंदर अगर ये दोनों इक्वली लाइकली हैं तो ये 1 हो जाएगा. तो 1 से जब ये बड़ा होगा तो आप एक ही फेवर में चले जाएंगे, 1 से छोटा होगा तो दूसरे की फेवर में चले जाएंगे. तो वी कॉल इट दी लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट. और इस डिसीजन क्राइटेरियन का जो नाम मैंने आपको बताया वो है मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी क्राइटेरियन. ठीक है. सो दिस डिसीजन क्राइटेरियन टेस्ट का नाम लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट है, एंड द डिसीजन वेग जो इसकी बेस पे आप करेंगे दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी क्राइटेरियन. और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वी कॉल इट द मिनिमम एरर क्राइटेरियन, क्योंकि इस केस में वी आर गोना मेक मिनिमम एरर्स. तो इस क्राइटेरिया को मिनिमम एरर क्राइटेरियन प्लस मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी क्राइटेरियन का नाम दिया जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू दी मैक्सिमम लाइकलीहुड क्राइटेरियन. अभी तो हमने पढ़ा ये जो था मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी क्राइटेरियन. नाउ देयर इज अनदर क्राइटेरिया व्हिच इज कॉल्ड मैक्सिमम लाइकलीहुड क्राइटेरियन, which is maybe the simplification of the same. Okay.
अच्छा अभी मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तो इस केस में वी वर नोइंग के व्हाट आर द प्रायरी प्रोबेबिलिटीज और व्हाट वाज द PS1 क्या थी और PS2 क्या थी, ठीक है, और फिर हमने पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी उसके बाद, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया S1 गिवन Z एंड S2 गिवन Z। बट मोस्ट ऑफ द केसेस प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं भी होती बाज़ औक़ात, यू नेवर नो कि ये क्या चीज़ है। वी कॉल देम द प्रायरी प्रोबेबिलिटीज एंड सम ऑफ द केसेस दीज आर नॉट नोन। So even if such information is available, sometimes it's mistrusted, और जैसे अभी आपने अपने केसेस में आपने जो है ना वो बहुत सारों ने आधे लोगों ने जवाब जो है वो ठीक नहीं दिया था, so we were not trusting this type of thing sometimes. So in such cases the usually decisions are made by assuming a conservative choice which is based on the maximum likelihood criterion, और वो ये है कि you just go and see this thing Z given S1 and C given S2 and take a ratio, and if this thing is greater than 1 you go in favor of H1, and if it is lesser than 1 then go in favor of H2. Now here there is a difference, ये चीज़ is different than the previous one. Previously we were seeing this thing, isn't it? ऐसा ही है। दिस रेशो इज कॉल्ड द मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी क्राइटेरियन, या जो पहले हमने नाम दिया लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट का नाम दिया था हमने। बट दिस थिंग इज डिफरेंट, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स नाउ, टोटली एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, आपको जो वैल्यू मिल रही है उसको आप वो जो आपने कर्व्स प्लॉट किए हैं ये वो PDF कर्व्स की वैल्यूज हैं, उनकी आप रेशो ले रहे हैं। दिस क्राइटेरियन इज कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्राइटेरियन, ML criterion commonly called. So here there is no priori probabilities involved, ठीक है, just you are taking the ratio of the two, right, and this is a simpler way of solving the situation. और अगर इसी को मैं previous case में apply करूँ, if I go back to the problem here and I ask you, okay जी यार एक तो तरीका आपने अभी solve किया proper, ये निकाला और ये निकाला, इधर चेंज ना करूँ आप कह रहे हैं? अच्छा चलो मैं कर लेते हैं। ठीक है जी, सो आई ब्रिंग इट बैक। मैंने ये कहा कि ओके जी यहाँ पे अब मैंने जो प्रॉब्लम लिया था, और फॉर ऑल दो जो लेट आए थे आई जस्ट रीफ्रेज इट अगेन, कि आपके पास दो सिग्नल क्लासेस थी और आपने उनमें से किसी एक सिग्नल क्लास को आप भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे। आपको फिर जो रिसीव वैल्यू मिलती है वो Z वैल्यू होती है, जो कि बेस करती है नॉइज कॉम्पोनेंट बीइंग एडेड टू द सिग्नल। So I have made, these curves are made with me, these are the experimental curves which are obtained after doing the experiment, sending S1s, getting Z's, then sending S2s, getting Z's. Where if you remember from our previous lectures, then we are able to draw the PDFs based on the data available. तो ये जब मिल गया मेरे पास, और अब मैंने आपसे कहा कि जी अब एक टेस्ट करते हैं और let's send, I don't know, or I'm not telling you कि what I'm sending to you, but I send something, you are a receiver, tell me कि क्या भेजा था मैंने। तो आप जो डिसीजन करेंगे वो बेस करेगा आपने क्या रिसीव किया। तो पहले केस हमने कहा जी ओके आपको ZA रिसीव हुआ जो कि ये वैल्यू है, राइट, और दूसरे केस में आपको ZB रिसीव हुआ। नॉट टेल मी कि अगर ZA मिले तो क्या S1 भेजा था मैंने या S2 भेजा था। इसी तरह से ZB मिले तो बताइए मुझे कि क्या मैंने S1 भेजा था या S2 भेजा था। तो फर्स्ट थिंग वाज टू गो बाय द बेस थ्योरम एंड कंप्यूटिंग दी A posteriori probabilities for ZA and ZB. We went and computed this thing, S1 given ZA and S2 given ZA, और दोनों में से जो ज़्यादा आई, या ये कहना चाहिए कि दोनों की हमने रेशो ली, तो वैल्यू अगर 1 से बड़ी थी तो हमने कहा जी कि S1 था, और अगर 1 से कम थी तो S2 था, प्रोवाइडेड दोनों को हम ऊपर नीचे डिवाइड करें, S1 ऊपर और S2 नीचे, ठीक है। और अगर ये ऊपर ऑपोजिट करेंगे, S2 S1 से ऊपर नीचे करेंगे तो फिर ये ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब इट इज requirement was this value to be computed. So this was called the maximum a posteriori criterion.
राइट। और यहाँ पे आपने देखा कि वो फैसला हुआ इस ZA की केस में, आफ्टर डूइंग ऑल दिस द डिसीजन वाज इन फेवर ऑफ S1 के S1 भेजा गया था। सिमिलरली ZB के केस में भी फेवर वाज गिवन टू S1, but after computing all this thing mathematically it was little more involved, you had to solve it, but by the look of it अगर मैं इन कर्व्स को ही देखूं जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स हैं, और आई आस्क क्योंकि यार मुझे सिर्फ इसको देख के बता दो कि क्या इजी वे आउट है मेरे लिए टू मेक डिसीजन कि S1 मैंने मुझे मिला है या S2 मिला है, विदाउट इन्वॉल्विंग दी प्रायरी प्रोबेबिलिटीज। तो आई कैन सिंपली से यार कि देखो इस कर्व के ऊपर जब मैं ZA को प्लॉट करता हूं तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ZA गिवन S2 इज लोअर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ZA गिवन S1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ZA गिवन S2 इज लोअर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ZA गिवन S1। सो आई कैन सिंपली से यार कि ये ज्यादा है तो ये इट मींस S1 भेजा गया है, बट दिस इज नॉट द अर्लियर वन, देखो उधर कुछ और था। This is called the maximum likelihood criterion. This is easier without involvement of any priori. अब ये तो दो केसेस है ना, एक तीसरा हो सकता है, अगर तीसरा सिग्नल हो तो वो इसके आगे होगा, चौथा इसके आगे होगा, पांचवा उसके आगे होगा, तो ये सारे के सारे सिग्नल्स जो है वो ऐड ऑन हो सकते हैं, केस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड फर्दर, बट बाय जस्ट द लुक ऑफ इट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ डिसाइडिंग अबाउट इट। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज शुड बी क्लियर कि क्या दोनों में फर्क है। सो इन दिस वे वी कैन मेक डिसीजंस अबाउट द signal detection once we do it in the receiver side, and it's all based on Bayesian and the probability theory. लेवल पे डिटेक्ट करेगा कि सिस्टम को भेजा गया। यार आप जब सिग्नल को रिसीव करते हैं तो आपके पास आप उसकी एक सैंपल लेते हैं ना उसका कि क्या सैंपल मिला है, तो सैंपल इज आफ्टर सम टाइम पीरियड। जो डिजिटल डोमेन में तो आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट एनालॉग सिग्नल नहीं मिल रहा होता आपको, ठीक है। तो वो सिग्नल आपको जो मिलेगा, जो भी आप सैंपल करेंगे से वो मिलेगा -1 -2 -0.5, राइट। इफ आई जस्ट गो हेयर से जब आपने ये भेजा, ये सिग्नल भेजा, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट है। आप इसको से इधर सैंपल करेंगे, अगर ये आपका T है तो आपको 1 वोल्ट लिखा हुआ नजर आना चाहिए। जब आप रिसीवर पे इसको रिसीव करेंगे वहां भी इसको आप सैंपल करेंगे, तो आपके पास जब सैंपल करेंगे तो हो सकता है सिग्नल खराब होकर इस तरह का हो चुका हो। अब जब सैंपल करें तो हो सकता है आपको वैल्यू मिले 1.5, ठीक है, या हो सकता है खराब होकर इस तरह का हो चुका हो, जब सैंपल करें तो वैल्यू मिले 0.5, या हो सकता है खराब होकर इस तरह का हो चुका हो, आपको वैल्यू मिलेगी -0.5। लेकिन ये जो इफेक्ट आ रहा है ये इस चैनल की वजह से आ रहा है। योर Z in fact is the AI plus AI is the noise, is the signal component plus noise. So noise can affect in any way. So आप सैंपल करके वैल्यू जो लेंगे आपसे, मैं जब इधर सैंपल करूंगा ZA comes out to be in our case was say something like 0.2। मेरे पास एक सिग्नल है 1, तो इसकी एवरेज वैल्यू 1 ही होगी ना, ये तो इसकी वेव फॉर्म है। तो इस वेव फॉर्म एवरेज वैल्यू से अगर ये बिल्कुल यूनिफॉर्म सिग्नल होता तो एवरेज वैल्यू अब 1 ही होगी। दूसरे केस में मेरे पास जो दूसरा सिग्नल है बाइनरी में वो एक -1 की वेव फॉर्म है, सो आई कैन कॉल इट कि यहाँ जो एवरेज वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। तो इनके दरमियान एवरेज जो है वो 0 है, कि Z जब 0 मिलेगा तो इट मीन्स, यानी मैं आपसे एक जनरल पूछूं कि यार मैंने 1 भेजा है, खराब होते होते कितना खराब होगा, 0 से ऊपर ही रहेगा ये जनरली, ठीक है, इतना मैंने इनमें फर्क रखा हुआ है। लेकिन जब आपको उधर 0 से जब भी वैल्यू बड़ी मिलेगी, यानी आपको छोटा इस तरह का सिग्नल मिलेगा, आप कहेंगे यार कि ये भेजा गया था, ये नहीं हो सकता ये। लेकिन जैसे ही ये 0 से ड्रॉप होगी वैल्यू, आप कहेंगे नहीं यार ये इसका मतलब है ये मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये खराब होकर इधर तक आ सकता है, ऊपर वाला इतना नहीं खराब हो सकता, राइट। So that central point has to be made as a common sense, but it has to be supported by some mathematical theory, which is there in form of Bayes theorem and in form of the map criterion, in form of the ML criterion. They are giving you that possibility or that intelligence which is embedded into the receiver side. Receiver doesn't know, ये तो हमारा इंसान का फैसला है ना, लेकिन रिसीवर ने तो कुछ मैथमेटिक्स की बेस पे डिसीजन लेना, तो वो डिसीजन उसको ये मैथमेटिक्स देगी कि आप किस तरह से डिसाइड करें। CRC जो आप साइक्लिक वो इनफैक्ट इसका ताल्लुक उसके साथ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। वहाँ पे तो आप एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर रहे होते हैं ना, और फिर एक्स्ट्रा बिट्स में गलतियाँ भी होती हैं। देखो जो स्पेशली जो आपकी जो फॉरवर्ड एरर करेक्शन है उसमें तो गलतियाँ करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं गलतियाँ हो रही हैं, गलतियों से आप सही बिट्स निकालते हैं, यानी बिट के अंदर मीनिंग छुपी होती है।
दिस इज इन फैक्ट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अभी इसमें हमने कोई एरर चेकिंग नहीं डाली हुई, कोई एरर डिटेक्शन नहीं डाली हुई, वी आर जस्ट गेसिंग विदाउट एनीथिंग। वो नाउ दोज टेक्निक्स आर, वो किस लिए हैं? वो टेक्निक्स हैं इस एरिया को कवर करने के लिए कि आपने गलत फैसला कर लिया, अब उसको ठीक करें आप। ये उससे पहले के डिसीजंस हैं, राइट? बिफोर यू मेक एन एरर यू आर ट्राइंग कि मैं अपना एरर को रिड्यूस करूं, बट नाउ यू आर मेकिंग एरर्स। अब आप कहते हैं ये एरर तो कर दिया मैंने, तो मैंने उसको डिटेक्ट करना है। दैट कम्स अंडर सीआरसी कि गलत गलती कर दी है, सीआरसी में चेक हो गई, रीट्रांसमिट करें मुझे, ठीक है? या मैंने एरर कर दिया है, मैं रीट्रांसमिशन नहीं चाहता हूं, उसको ठीक करें। एफईसी स्कीम जिसमें आपकी टर्बो कोडिंग है, राइट? इस तरह के और कोडिंग स्कीम्स हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी, साइक्लिक कोड्स कुछ और भी हैं जिसमें आपकी एलटीपीसी कोड्स हैं, कुछ और ब्लॉक कोड्स हैं। वो कोड्स बेसिकली एरर करेक्ट करने के लिए हैं। These all techniques are to make or to allow the receiver to make decisions, and those decisions which reduces the error without any other schemes involved. इसमें पैरिटी का वही इनका सवाल था। अभी इसमें पैरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। पैरिटी इज टू डिटेक्ट एरर्स कि एरर कर दिए, अब आप डिटेक्ट करें कि एरर जो है वो है हो गया है, तो आप उसका कुछ हल करें। क्या आप चाहते हैं कि दोबारा चीज़ मिले, आपको भेजी जाए, या आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो उनका ताल्लुक उस तरफ है। यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ आपको मिल रही है आप उसमें कम से कम एरर करें, ठीक है? एरर डिटेक्ट नहीं कर रहे आप, एरर कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मेकिंग दी पॉजिटिव रूल्स, ठीक है जी? सो दिस इज एज फार एज दी एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम इज कंसर्न। सो लेट्स टेक go further and move ahead. And maybe if I just go to the slides now and give you a mathematical problem over there. I hope sound is working fine. Yes. Abed, if you can just go and bring some spray over here. These flies are teasing Ansar Saab. बिल्कुल करेंगे अटैक इसको आप। इसका हल यही है वैसे। सर वो बड़े लोगों की तरफ जा रही है। ठीक है भाई। आज में 9:30 करेंगे ना तो फिर 10 पे चले जाएंगे हम। अब ये है कि वो आधे घंटे का जो मार्जिन है वो आप उसको नहीं सर 9:30 मींस 9:30 नहीं, वो मैं मार्जिन को एक्सटेंड कर जाऊंगा ना, क्योंकि आई एम कीपिंग दिस थिंग माइंड के 9 बजे मेरी क्लास है तो मैक्सिमम मुझे 9:30 जो है शुड स्टार्ट ऑफ। तो वो
That is the ये एक mental issue है होता है बाज़ औक़ात. If I'll make it 9:30, then I'll get up at 9. It make 10. This is how life works. That is why keep it 9, but max we'll start at 9:30. इससे ऊपर इंशाल्लाह will not go. लेकिन कभी 9 बजे भी आ जाऊँगा मैं, वो डिपेंड करेगा. आपने 9 बजे ही आना है. ठीक है. अगर चेंज इफ आई एम गेटिंग लेट आई लेट यू नो at least 2-3 hours before. How many of you have a class after this? Okay. जी नहीं समझ आई. मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूँ फिर उसको आगे कंटिन्यू अहेड. सर नेक्स्ट लेक्चर होगा क्या, उसको फिर हम थोड़ा सा देख भी लेंगे. अभी बेस तो हम मैं भी उसी के ऊपर लेकर आ रहा हूँ. मैं उसी पे लेकर आ रहा हूँ. बेस तो हम थोड़ा सा देखें हैं कि थोड़ा सा आज जो हमको इजी लगा ये. अच्छा जी. Okay, so if I just give you a glimpse of communication which we do in the analog domain and then towards the digital domain. So you must have seen these slides if अगर आपने DC का कोर्स दिया हुआ है और अगर पढ़ रहे हैं या maybe पढ़ेंगे something like this. देखा है. So this is an analog system or analog transmitter and receiver. Here what we have the message signals which are modulated. Those modulations are then multiplexed, right? It may be of any procedure. Here it's shown the frequency division multiplexing. That signal is transmitted through the channel. You tune to a particular frequency. Only that frequency in fact then demodulated to give you the sound. So here this sound is a low frequency content. The modulator's job is to bring this low frequency into a higher frequency range to send it across the longer distances. As apart from this, modulator का काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसने frequency को up scale करना होता है, बल्कि ये भी इसका काम होता है कि वो frequency को suitable range में लेके जाए. In fact like जिस तरह अब ये इस कमरे में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अब कोई एक sound generate कर रहा हूँ, तो ये हमारी जो आवाज़ होती है, this is not more than what is the range of frequencies? 2 to 20 kilohertz, right? So there's a range of human sound or human speech is from 2 hertz to 20 kilohertz, yeah, 200 hertz to 2 kilohertz. That values, but the upper limit is 20 kilohertz. Cannot be more than 20 kilohertz. Most of the energy of our sound is limited up to 4 kilohertz. More than that are the niceties and the details of sound. So agar if we cut down the content up to 4 kilohertz, still that thing will work. But you must have observed in the older telephones, once the digital systems were not there, yeah, the technology was not that advanced, so you were sometimes confused who is talking on the other side. The sounds were similar type of, Irfan is talking but you may recognize him as Abid, or Abid is talking, you may recognize him as Imran, because of the cutting down of the frequency content which gives the details of sound. But now things have improved with the passage of time. But point is that your sound is a low frequency content because cannot go beyond 20 kilohertz. So that is the reason once I talk, I can just talk to a limited range. Frequency in fact is directly proportional to the energy content in the signal. So energy is less,
My energy can take my sound maximum to 20 meters, 30 meters, 100 meters. Maybe if I shout, my sound can go to 120 meters, 200 meters, 300 meters, right? But by shouting, what I'm doing, I'm trying to make my voice, my sound shrill, or it's getting towards the high frequency side. I'm trying to increase the frequency. So accordingly, you must have observed the women voice or women noise or the women signal is reaching to larger distances than the men signal, because their frequency content is towards the higher side. Pitch is more than our pitch. So there is a relationship of frequency with the energy. So if somehow we can increase the energy of the signal, it can go to the longer distances. So अगर मैंने अपनी आवाज़ को यहाँ से कराची भेजना है या अमेरिका भेजना है, तो I have to raise its content to a higher frequency content. एक तो ये वजह है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर नंबर ऑफ अदर रीजंस, लाइक एंटेना डिज़ाइन के अंदर भी ये चीज़ यूज़ होती है. प्लस आप ये भी चाहते हैं कि जी अब ये दीवार है, ये दीवार एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को क्रॉस होने देगी. अगर मैंने बात करनी है, लाइक अगर आप इस शीशे के क्रॉस देखते हैं तो आपको नज़र तो आ रहा है, राइट, लेकिन अगर आप एक्सरे विजन आपके पास होता अगर फॉर एग्जांपल, तो आप इस शीशे के क्रॉस नहीं देख सकते थे, ठीक है, आप इस दीवार के क्रॉस देख सकते थे. तो हर चैनल का एक ख़ास फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है जिसको वो अलाउ करता है और कुछ को वो ब्लॉक करता है. तो आर एम ऑफ द मॉड्यूलेशन इज टू ब्रिंग द फ्रीक्वेंसी टू दैट सुटेबल रेंज विच इज सुटेबल फॉर दैट मीडियम. सो अगर हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर का भी एक मॉड्यूलेटर होना चाहिए. अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स पे जाने के लिए भी एक प्रॉपर मॉड्यूलेटर होना चाहिए. वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस रेंज में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सो मॉड्यूलेटर जॉब इज टू इंक्रीज द कंटेंट सुटेबल फॉर दैट वायरलेस और दैट मीडियम विच यू आर यूजिंग. डिजिटल में हम आते हैं ना अभी, ये तो मैं आपको अनलॉक बता रहा हूँ. इसके नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ तो मैं डिजिटल पे आऊँगा अभी, ठीक है. तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो इन अ स्टेप वाइज प्रोसीजर. सो हियर वी हैव मॉड्यूलेटेड से. अब ये दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ मे बी a radio channel. So for example, there is FM 99, this is FM 100, this is FM 102.6. All people are sitting together, they are talking, and their voice is modulated to a particular higher frequency. FM 99.9 megahertz, 100 megahertz, 102.6 megahertz. All those frequencies are then transmitted by FTM into the atmosphere. You are tuning your radio somewhere in your car, in your home, and that is in fact a tuner which you are using. जो कि क्या करते हैं, आप 99.9 पे उसको ट्यून करते हैं. जब उसको आप ट्यून करते हो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो वो सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी या वो वाली सिग्नल को फिल्टर आउट कर देता है टुवर्ड्स योर रेडियो, बाकियों को फिल्टर इन कर देता है, बाकियों को फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है. तो यू गेट ओनली 99.9 मेगाहर्ट्ज गोइंग इन योर सिस्टम. दी मॉड्यूलेटर देन ब्रिंग योर हायर फ्रीक्वेंसी बैक टू दी साउंड फ्रीक्वेंसी and then you start receiving it. But these signals, these voice signals, they could be infinite shapes. There is no single shape for these. You have to reproduce the sound waves. That is the important thing. ठीक है जी. इसलिए अगर आपके जहन में हो, आपसे कुछ अर्से पहले जो जनरेशन 1 डीसी सिस्टम से डिजिटल सिस्टम्स एम्प्स के जो मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, वो बेस करते थे एनालॉग टेक्निक्स के ऊपर, राइट. उसमें इफ़ यू हैव हर्ड और मे हैव डन इट के पीपल यूज टू कीप अ रेडियो and they used to tune it to a frequency and they used to catch the signals of the amps phones. People are talking, you could listen to those. Because in between there is no security mechanism. You can just catch it, demodulate it and listen it. Right? So such like things were the motivators for improving upon the technology. People went from analog to digital. So analog से जब digital में आप आते हैं तो you have number of functions. I'll shortly just explain these because this is not the aim of the course, but I'll just bring in where we have to bring in the knowledge of decision. So here we have the analog signal which is converted to analog to digital form, and we get the bits from there. Now once we have the bits, these bits can be from voice, can be from video, can be from data. So all those things are creating bits, and bits are bits. They are just balls. Balls can be placed, can be shifted, can be removed, can be inserted. So we can do number of things, like source encoding is one thing which we can do. I'll not go into detail ये क्या चीज़ है, but this is a compression phenomena. Then we have the encryption bits which we can add. We can do the multiplexing of bits. We can do the scrambling operation. We can do the channel coding. We can do some other operations, like we can transmit through the band pass system. We can transmit through the baseband system. दोनों चीज़ें possible हैं यहाँ पर, जो कि आप decide कर सकते हैं कि आप किस तरह का system भेज रहे यूज़ करना चाह रहे हैं.
अगर आपका वायर्ड मीडियम है तो आप बेस बैंड में कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आपका वायरलेस मीडियम है तो बैंड पास में हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करते हैं. फॉर अ पर्टिकुलर बिट यू डिसाइड अ हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट, फॉर अनदर बिट यू डिसाइड अनदर हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट एंड सेंड इट फॉर दैट टाइम पीरियड. यू इंटरप्रेट इट, receive it and then make decision कि क्या चीज़ आई है मेरे पास, right? That is how you do the transmitter side. On the receiver side you do it in the reverse order. You demodulate, you receive the signal, you demodulate it, right? That demodulation in fact is to conversion of those symbols into bits. So this demodulation requires, I'll show you कि क्या चीज़ है. Demodulation requires the sampling operation as well as detection operation. You receive it, you sample it, it means you receive a Z. That Z is in fact the point to make decision ke either it's a H0 or H1 or H2, H3, H4, H5, what it is. That is the detection procedure. And once you detect, it means you write the meaning of that कि ये bit क्या है, 00 है, 01 है, 10 है, 11 है, या ये 0 है, या 1 है, based on के कौन सा memory system है. And then what you do, you further take those bits along and do the reverse order operations and reach to your original signal from where you started off. Right? So our aim up till now is to go and see in detail what this demodulate block does. So if I just show you the picture which we'll be discussing in the next class is somewhere here. So again here is this is the blocks जो कि वहाँ पे मैंने भी show किए थे. You see we have a format block, we have a source encoder, we have the encryption, channel coding, multiplexing, etc. The upper side is the transmitter side, lower side is the receiver side. So once you receive something over here, then you do some operations, and if you observe here, so there is an important thing here is this one. जो कि हमारे डिसीजन थ्योरी में यूज़ हो रहा है कि what we do, we demodulate and sample, right? And then based on that sampling we detect. So there are two-stage process which is involved where you make a decision. And if I go and bring this into a broader block, so we have a transmitted waveform which is added on with the noise, and that noise you receive that signal. That received signal in fact then passes through a frequency down conversion, right here, then a receiver filter, then an equalization filter, then you do a sampling operation. From this you get a Z value here. That Z value is in fact is there to compare with a threshold, do a comparison and then give a meaning of that thing. So ये जो चीज़ें हैं इसमें आपकी decision theory involve हो जाती है, और वहाँ पे आपका फिर comes in the map criterion, the ML criterion, which will see कि वो कैसे apply होते हैं once we do this mathematics here. ठीक है, we'll see this कि किस तरह से ये काम कर रहा है, और ये आगे अल्टीमेटली हम ये सारा कुछ करते हुए जब इधर जाते हैं तो हम किस तरह से अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि एरर कम से कम हो और जो सिग्नल कंटेंट है वो उसकी बेस पे हम कुछ डिसीजन कर सकें. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट क्लास, राइट. ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द मैच फिल्टर. के मैच फिल्टर होता क्या है, इसका नाम आपने सुना होगा. तो ये कैसे हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं बाय वेरियस मेथड्स. सो दिस एंटायर मैथमेटिक्स इज देयर. इसमें डिटेक्शन है, डिसीजन है, और ये देखें सारा उन्हीं चीज़ों का रोल जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है. ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच. वी कीप इट टिल दिस पॉइंट. आई होप दिस वाज अ गुड सेशन. So thank you very much. We stop.